So first of all, 20 from Myanmar seek refuge in India. They've applied for formal refuge, but Indian government has to make this call because these people, they will not be routine people who are coming to India for seeking refuge. They'll be the people who are political refugees. Right now, most of the people in Myanmar are protesting against their government, which is literally the military government that has overthrown or toppled the government of the day, right? And thereafter, they have been sitting. Even the ambassador of Myanmar to the United Nations has claimed that it is up to the United Nations if they want to take any military action or if they want to intervene in the Myanmar. So that is a big news because right now India has not been making any active statements or active movements when it comes to Myanmar. If these 20 people are seeking refuge in India, India will have to make a decision on their application. Whether we accept it or whether we reject it, both are going to have long term implications on India's policy towards its neighborhood. India has already borne the brunt of having Dalai Lama over in India and now bringing people from Myanmar during a tough time. It might further sever our ties with Myanmar, right? So China has been looking forward to get an opportunity, and we really do not want to give that to China. So let's see what will happen. These are around 20 people. Some are security personnel. They have crossed they've crossed into India from Myanmar and are now seeking refuge. So let's see what will India do in this matter. Next is OTT platforms will not have to register. Also, in the self-regulatory body, there will be no government nominee. What does this mean? If you remember, I told you that there will be a self-regulatory body formed for the OTT platforms. They will be setting the rules. They will be self-certifying the content that has been created. So the OTT platforms had to classify the content into certain age-based categories. These were universal, under adult supervision 7 plus, under adult supervision 13 plus, under adult supervision 16 plus, and adult. These were the various categories, right? So पेरेंटल कोड्स लगाने थे, सिस्टम लगाना था कि जिससे इजीली एक्सेसिबल ना हो कंटेंट जो कि विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी वॉच्ड बाय द चिल्ड्रन. इन सारी चीजों को लेके काफी ज्यादा इश्यूज एंड ह्यू एंड क्राई क्रिएट हुआ था. लोग बोले कि सरकार सीधे सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ही रेगुलेट करना चाह रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है लोगों ने बोला था कि सरकार डिक्टेटरशिप पे उतारा है अपनी. ठीक है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट विल डिक्टेट द रूल्स फॉर द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीथिंग. इट विल गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री स्पीच एंड एवरीथिंग. But then literally it is not the case. You should see that even Supreme Court has made it very clear that some even show pornography. I mean, Ekta Kapoor की जो पूरा platform बना हुआ है उसको if you watch you will see that literally they're showing anything. ठीक है, on the name of creating cool content, these people are providing abusive content. On the name of sensational content, they are providing sexual content. All of this is available freely to children. All of this is freely accessible to everybody in the society. This is not good and should not be allowed to happen this way, which is where we really need to have these regulations. And even if they look stringent, indeed, the onus lies onto these platforms only for bringing this rap to themselves. Next point is Bangladesh border killings due to crime. Minister in Dhaka ahead of Modi visit. So, हुआ क्या था? The criminal activities are responsible for the killings along the India-Bangladesh border. अभी क्या हुआ? इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है दैट इज मार्ड बाय क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट. कैन somebody tell me what is the good that is most smuggled between India and Bangladesh? Opium. Cows. Cattles. Not just cows but cattles. ठीक है, कैटल्स को क्यों हम लोग बांग्लादेश में इतना लेके जाते हैं? देर आर मल्टीपल रीजंस. फर्स्ट ऑफ, यहाँ पे जो थोड़े पुराने हो चुके होते हैं एनिमल्स उनको कल करना बहुत मुश्किल है इंडिया में, स्पेशली इफ इट इज अ बोवाइन एनिमल, गौवंशी जानवर है तो उसको कलिंग उसकी बहुत मुश्किल है. तो होता क्या है, कलिंग के लिए बांग्लादेश ले जाते हैं काफी बड़े पैमाने पे. प्लस बांग्लादेश में काफी फर्टाइल लैंड है, जो एनिमल्स होते हैं वहां पे ब्रीडिंग रेट काफी अच्छा हो सकता है, तो वहां से यंग एज के कास्ट वगैरह को इंडिया में लेके आते हैं. सो दीज आर द वेरियस थिंग्स विच यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट. और जब ऐसे स्मगलिंग हो रही होती है क्रॉस बॉर्डर, तो यू रियली हैव टू गो अहेड एंड काउंटर देम. एंड दिस काउंटरिंग often ends up into shootout, and this leads to killing of a few people. So border killings which are happening,
they are due to generally criminal activities, and that's what it is about. Okay. Next point is the 30 nation international north south transport corridor, which is extending from Russia to India. You must have seen that INSTC, Azerbaijan होते हुए इंडिया उधर तक आता है, ईरान तक. तो उसमें what we are calling for is that we should put Chabahar as a key corridor. ठीक है, key point बनाना है हमें उसका. Right now Chabahar is acting as a supporting point, but we want that it should become a key point. Can somebody tell कौन से country में Chabahar port है? सर ईरान ईरान में है. और पाकिस्तान के किस पोर्ट के बिल्कुल पास पड़ता है ये? ग्वादर पोर्ट. ग्वादर पोर्ट के, करेक्ट. ओमान में इंडिया ने कौन सा पोर्ट बनाया है, ये लिया है? दुक्म पोर्ट. ठीक है, दुक्म, DUQM, दुक्म पोर्ट इज द वन. Next, I told you about Haryana's job quota rule, which is worrying the private sector, and it has been told that you have to relook into it. अब देखते हैं होता क्या है इसमें finally. Then EPFO retains annual rate of interest at 8.5%. ठीक है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एनुअली डिक्लेयर करते हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, तो इस साल के लिए 8.5% का एनुअल रेट डिक्लेयर किया हुआ है. Then IST in top 100 list in natural sciences category. It is a very big achievement for India that our institution has, one of our institutions has been able to break into the top 100 institutions globally when it comes to the natural sciences category. ठीक है, तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में यू सी दैट 49th प्लेस पे IIT बॉम्बे, 54th पे IIT दिल्ली एंड 94th पे IIT मद्रास है. नेचुरल साइंसेस कैटेगरी में ISC बैंगलोर जो है दैट हैज एंटर्ड ऑनटू द 92nd spot. Overall, 25 Indian programs from 12 institutions made it to the top 100 in their specific subject areas. ठीक है, this rating is released by QS quarterly. इसमें लेकिन कुछ problems भी हैं. ठीक है, there are certain problems with this kind of rating. I'll tell you what are those major problems. First off, India के अंदर low teacher to faculty to student ratio है. And why is it so? Because India does not count PhD scholars. I've already told you, I being a PhD scholar must be counted towards faculty in my institution या university में. But this is not so. I'm not counted as a faculty, despite the fact that I have the capabilities and I will be required also to take a few classes. ठीक है, and yet I will not be counted as so. वहाँ पे टीए होते, टीचिंग असिस्टेंट्स हु आर PhD स्कॉलर्स, जो जाके प्रोफेसर्स के साथ में क्लासेस में रहते हैं, हु असिस्ट द स्टूडेंट्स इन देयर डाउट्स एंड एवरीथिंग. यूएसए यूके में ये सब को काउंट करते हैं टुवर्ड्स द फैकल्टी. ठीक है, नंबर ऑफ फैकल्टी, बट इंडिया में नहीं करते. दैट इज व्हाई आवर फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो इज वेरी लो. सेकंड, हम लोग रिसर्च पे ज्यादा पैसा नहीं खर्च करते. दीस पीपल डू दैट. थर्ड, देयर एंडाउमेंट फंड्स आर बिगर. वी डोंट हैव एंडाउमेंट फंड्स एट ऑल. अब होता क्या है, जैसे तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ. You know what is the total endowment fund of this Harvard University? Can somebody try to make a guess, wild guess? एंडाउमेंट फंड मतलब कि कितना पैसा आपको डोनेशन से मिलता है. तुक्का ही मार लो. Sir, 100 crore? 100 crores approximately, इससे कई गुना ज्यादा. 200 crores or let's say 28 million approximately is the let's say budgetary support which JNU gets. ठीक है, budgetary support. This is what JNU gets, and everything is to be done within that 200 crores. And for Harvard University, only one thing, that is the endowment fund, is approximately $48 million. $48 billion. Now think about it. $48 billion कितना heavy amount हो गया, right? अब ये पैसा आता कहाँ से, कोई बताएगा? Sorry? Alumni, right? So alumni meet जो होती है उसमें पैसा आता है. एक सेकेंड.
So it is approximately 3.5 lakh crores which they have. रुपीस के टर्म्स में बात करें तो हमारी यूनिवर्सिटी 200 करोड़ में चलती है, उनकी कहाँ 3.5 लाख करोड़ में. Sorry. So होता क्या, let's say if you go to the Harvard University right now, you will get some form of scholarship. Some form of scholarship तो मिलेगी ही मिलेगी तुम्हें, चाहे वो $1000 की क्यों ना हो, but you will get something at least. And when you are getting something from the college that is becoming a support towards your education, you feel very attached to your college. ठीक है? Then once you are graduating, you will not just graduate from the college, but they will also conduct alumni meet. They will ensure that they stay in touch with you. Their placement group is very active. वो कहीं ना कहीं बात करके तुम्हारी नौकरी भी लगवाएंगे. They will support you to the maximum level possible. In fact, there is something called as a need-based scholarship, which means if your need is 100% tuition fee, you will get 100% tuition fee as scholarship. Okay, that is need-based scholarship. They provide such huge support, and when this happens, people become obliged to their institution. And end of the day, they approach to the alumni. They will send periodic emails asking for donations. So these donations ensure that these colleges keep running. Apart from that, तुमने सुना होगा ना कि so and so businessman got a doctorate, honorary doctorate from Harvard. So and so person has got honorary doctorate. This actor has got an honorary doctorate. सुना है? All these doctorates are literally purchased doctorates. Literally, they have to make donations, and in turn, they get a doctorate degree. Many these businessmen, business tycoon, and everyone pays to the colleges, and end of the day they get this honorary doctorate. बस कहने के लिए डॉक्टर लग जाता है, नाम के आगे कोई मतलब नहीं होता उस डिग्री का, कहीं यूज नहीं कर सकते, कुछ नहीं होता उससे. बट कॉलेज को पैसा मिल जाता है जिससे वो बच्चों को पढ़ा सकता है. सो आर फंडिंग नीड्स टू इम्प्रूव, जिसमें कॉलेजेस को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए. द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज टेकन स्टेप टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, बट येट देयर आर माइल्स टू गो. ठीक है, एंड देयर आर मेनी मोर लकूना. तो एक बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन वाला पार्ट पढ़ लेना, इट विल गिव यू अ ग्रेट इनसाइट्स ऑन व्हाट हैपेंस. ठीक है. एक और न्यूज है, पेपर में नहीं निकली है, बट संसद टीवी जो है वो क्रिएट हो चुकी है. लोकसभा और राज्यसभा टीवी हैव बीन मर्ज्ड. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे तो कुछ है नहीं. यहाँ पे भी कुछ नहीं है. अगेन नथिंग ओवर हियर. ये पढ़ लेना, दिस इज गुड. नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल, डांडी का क्या पाथ था, प्लेसेस क्या, थोड़ा एक रिवीजन हो जाएगा फटाफट हिस्ट्री का. ठीक है, गो थ्रू दैट. ये वाला चाहो तो यू कैन लीव, बट ये छोटा वाला पढ़ लेना. यस, देन आज फिर से यहाँ पे पार्थ स्वामी जी का आया है, सॉरी पार्थ सारथी जी का आर्टिकल आया है. नो स्टेलर इन प्रोटेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी, दिस इज गुड वन. आउटकम्स फ्रॉम जुडिशरी इन डिफेंस ऑफ लिबर्टी, फ्री थॉट एंड स्पीच सीम टू बी फार फ्रॉम रूटीन. काफी अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है, गो थ्रू दैट. यहाँ पे मल्टीपल केसेस के अंदर, जैसे स्पेशली जो प्रिया रमानी केस के अंदर हुआ है, दैट हैज बीन डिस्कस्ड. प्रिया रमानी और एमजे अकबर के केस में हुआ वो था, मीटू के चक्कर में काउंटर एलिगेशन लग गया था प्रिया रमानी पे, जहाँ पे एमजे अकबर जी ने बोला था कि शी हैज डिफेम्ड मी. तो उसके रिलेटेड है थोड़ा सा. With Biden, India may need a new template. Indo-US relations के लिए अच्छा आर्टिकल है. If you want, you can go through that. Then all of these are simply waste of time. Don't go through these. एक जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तो अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, then go through this article, ending the war in Yemen. Otherwise, you can ignore it. Then further you will keep moving. कुछ नहीं है यहाँ काम का. बड़ा अच्छा लगता है when the someday paper is like this. You know, when you're reading it, literally everything moves and there is no important news. ठीक है. So next is group of ministers जो है, group of ministers has suggested steps to stem the negative narrative. ठीक है. तो they include tracking 50 negative and 50 positive influencers and neutralizing those writing against government without facts. तो अभी क्या है, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रेरोगेटिव बहुत चल रहा है लोगों का. इतना ज्यादा चल रहा है कि people are literally saying anything and everything without having any confirmation. ठीक है, without checking the facts, without verifying the facts. Amid all of these, you must have seen that due to vaccine, COVID vaccine, a lot of people have raised concerns.
कुछ लोगों ने ये तक बोला कि लोगों को पैरालिसिस हो रही है। एक भाई साहब तो इतने महान थे कि उन्होंने ही क्रिएटेड अ एंटायर वीडियो एक्सप्लेनिंग हाउ कोविड-19 वैक्सीन is literally nothing but only an attempt by Indian government, which is a Hindu government, to go ahead and make all the Muslim people important. Literally, this was the video he created, and thereafter he got arrested recently. So, in order to counter the government's propaganda, government's policies, people are going anywhere and everywhere to every level without keeping into any limits, and this creates fake narratives that create discontent in the society. सो गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग दिस ग्रुप जहाँ पे एक नेगेटिव नैरेटिव जो है उसको रोका जाएगा, गवर्नमेंट को थोड़ा पॉजिटिवली लोगों से अप्रोच करना पड़ेगा. बट आई थिंक देयर इज वन मोर थिंग व्हिच नीड्स टू चेंज, एंड दैट चेंज इज दैट गवर्नमेंट शुड बिकम मोर टॉकेटिव, गवर्नमेंट शुड बी मोर ओपन. And this is the only point where I think I have serious disagreements with the way BJP government has been acting since 2014. From 2014 till 2021, the only interview given by Prime Minister Narendra Modi was to Akshay Kumar, who is not even a journalist. So realize this one single thing. Otherwise, Modi ji monologue करते हैं, बस आके मन की बात पे बोल के चले जाते हैं. People have become so bored that अब तो मन की बात बोलना भी और सुनना भी छोड़ दिया है. ठीक है. मोदी जी के मन की बात जो है, it has been a monologue in which he comes and tells the nation what he feels, but then it's not a place where people can ask him a question. And we have seen that this government has been particularly shying away from questions. Anytime you file a RTI, you usually get a response under the section 7 or 8, जहाँ पे कह देते हैं कि नहीं बता सकते हम आपको. कोई ना कोई बहाना मार के वो यही बोलते हैं हमेशा कि नहीं बता सकते हम आपको. Various cases happened. For example, PM Cares Fund is still the biggest question that has been left unanswered. For example, the Rafale has been one of the biggest questions that's been unanswered. There are many more such questions that have been unanswered. Until the time there is a free flow of information, the negative narrative shall always win. People will always keep asking this question that why is the government doing so? Because we saw that last time the government did not tell people anything, it was the unemployment data. एंड इलेक्शंस तक नहीं दिया गया था, इलेक्शंस के ठीक बाद में दे दिया गया उस डेटा को रिलीज करके, वेयर अनएम्प्लॉयमेंट वाज एट अ 45-year हाई. ऑल्दो देयर वर डिफरेंट रीजंस, इट वाज सो बिकॉज दैट हम लोगों ने पूरी मेथोडोलॉजी सर्वे की चेंज कर दी थी पीएलएफएस की. बट स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे से मूव करके आप पीएलएफएस पे जब भी गए हो तो डेटा में प्रॉब्लम्स तो आई हैं. दिस डज नॉट मीन कि इलेक्शन आ रहा है तो आप डेटा ही रिलीज नहीं करोगे. सो अंटिल एंड अनलेस द गवर्नमेंट इज ओपन, I don't think any group of ministers' suggestion could make any difference. अगले पॉइंट पे आ जाते हैं. ये सब ऐसे ही है. एक SCNIM वगैरह का भी इस समय चल रहा है डिस्कशन वगैरह. They are trying to sort things out, but not much is taking place there. SAF fighter jet tender still ongoing, opened up for up to 2 more categories. So एक एयरक्राफ्ट है Gripen E, ठीक है. तो साब जो है कंपनी है उसने मैन्युफैक्चर किया है इसे. इट्स अ स्वीडिश कंपनी. सो व्हाट इज दिस डूइंग? दे आर ट्राइंग टू ऑफर देयर एयरक्राफ्ट्स टू इंडिया फॉर नॉट जस्ट द सिंगल इंजन वेरिएंट बट आल्सो फॉर द MMRCA डील व्हिच इज अबाउट टू बी रीओपन्ड. तो देखते हैं साहब को हम खरीदते हैं नहीं, बट दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड इफ वी डू इट, बिकॉज Gripen is one of the most agile aircrafts that is there. Eurofighter Typhoon से ज्यादा अच्छा एयरक्राफ्ट है to be precise. It is much better compared to the F-16, F-18 also. But what these people are trying to sell off to us is a newer version of F-18 aircrafts, US people. So if they are offering the latest one, in that case, we may look at the US. Also, for the purpose of improving our ties with the US, we may want to go with the F-18. But otherwise, Gripen is one of the top contenders. We have also said that we might go forward and purchase a few more Rafale, but this time the deal would be for greater numbers and everything. Let's see what happens. India-French ties are also very good already. I would say one of the best ties that we have are with the French, and that has obviously opened room for purchasing more Rafale. But let's see what will happen in the future. High Court seeks reply on vaccine eligibility. Question ऐसे चलते जा रहे हैं लगातार, but अभी कुछ नहीं होना है यहाँ पे खास. तापसी पन्नू जी के यहाँ पे छापा पड़ा है फॉर रिलीज ऑफ मूवी, जहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड इनकम ऑफ 300 crores इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज बीइंग क्वेश्चनड. ठीक है, सारे हम लोग देख चुके हैं.
UN tells Myanmar military to stop murdering protests. That is where we can see that UNO is not really going to enter into the Myanmar conflict without evaluating its own options and without warning it peacefully. Once it has done so, then it will be over the willingness of the largest contributors and the P5 nations, wherein I think China will have to take a very definite stance, and so will have to India, because India is also a member of the UN Security Council. So both the countries will have to take a call on whether they want any kind of military movement in Myanmar or not. And if so happens, the biggest participation will come from indeed India because of our contribution to the UN peacekeeping forces. Next is Biden government to deepen global alliances. They've also approached Iran for the JCPOA. अब कुछ लोग JCPOA को जैकपोआ बोलते हैं. हर चीज को अपने अपने नाम मत दिया करो, क्योंकि कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा. JCPOA is the name, JCPOA is the name. That's it. Do not call it जैकपोआ or something. Because I recall somebody asked me, सर जैकपोआ के अंदर तो ये हो रहा है, and I was like जैकपोआ क्या होता है? ठीक है, ये शॉर्टकट बनाने के चक्कर में कभी कभी कुछ और ही हो जाता है. Don't do that. Next point is, ahead of Floyd murder trial, US House clears police reforms. So you must remember George Floyd का last year क्या हुआ था, when a police officer stepped on his throat and thereafter he was murdered. This led to the Black Lives Matter movement, and finally अभी police reforms को उसके बाद में initiate किया जा रहा है, because it is considered the laws as well as the police in the United States are pretty much against the people of color. So we'll see if these police reforms are literally implemented or not. But then again, we will not see. It's the people of the US that will see. If anything comes which with Indian perspective, then I would like to tell you. Otherwise, ये news India पर से कोई importance नहीं रखती और हमारे exams के लिए तो बिल्कुल important नहीं है. उसके बाद में ठीक है, सब ऐसे चलता रहता है. नेपाल में पीस ट्रील एंड पीएम पाकिस्तान के अंदर ट्रस्ट वोट है कल, तो nothing more important than that. Then fuel prices to drop if brought under GST, says SBI's research. Now यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना. I mean, I'm no economist, but there is just one basic thing which I would like to say. This person has said that if we bring GST under, if we bring petrol and diesel under GST and we notify them, in that case, a liter of petrol would cost 75 and a liter of diesel would cost 68. This would lead to a loss of revenue to the government up to the tune of 1 lakh crores, which is 0.4% of the GDP. ठीक है? This much is what we will lose, and this is why we have to bring it into under the GST. But to the same person, my argument is that सरकार को, मतलब सरकार तो ऐसा है नहीं कि अनपढ़ हो, सरकार को भी पता है कि ऐसा कर सकते हैं. Why is the government not reducing? Even without bringing into GST, we can reduce the taxes, but we are not reducing the taxes primarily for one reason. We need slight inflation in the economy. And additionally, the government is scarce of the resources. You are asking us to forego 1 lakh crore rupees of revenue. Where would we compensate it from? Do you think we should increase our borrowing so that the future generation keeps on paying for the loans that we are taking right now? It makes no sense, absolutely. And this time, I believe personal consumption of petroleum has been reduced, particularly because of this high rise in petroleum and everything price. Obviously, it has been inflationary. There are certain negatives associated with it. But then again, right now is not the time where we can let forego 1 lakh crore rupees of revenue, whether be it 0.4% of our GDP or whether be it 0.1% of our GDP. It's a dilemma that the government has been stuck into for at least 1 year. And price falls, if any, would come naturally through international fuel prices. And I believe that the government will not be cutting down any taxes. And if tax cuts are to happen, it will start happening from the states जहाँ पे elections होंगे. वरना नहीं करेगी सरकार, क्योंकि कंडीशन ही नहीं है इतनी हमारे फाइनेंसेस की अच्छी. आगे यहाँ पे फिर वही फर्जी नोट्स है. ये है PSU banks bad loan additions में moderate. There are people who are consistently talking about how these reforms will happen, क्या impact होगा इनका government and क्या impact होगा इनका economy पे. But a bad bank is the need of the hour. So understand that bad bank आएगा तो routine banks के जो चार्ट वो होते हैं, क्या कहते हैं, कि अकाउंट्स होते हैं, जो शीट्स होती हैं, बैलेंस शीट्स, उससे वो बैड लोन्स को हटाया जा सकता है. दैट मींस द रियल स्टेटस ऑफ फाइनेंसेस वुड बी अवेलेबल एंड विजिबल. देन अगेन यहाँ पे भी कुछ नहीं है खास. सो वी कैन कॉल इट अ डे. न्यूज हो गई सारी. अब क्वेश्चंस आप लोगों का अगर कोई है तो प्लीज आस्क.